अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं हूं टाइसन और आप देख रहे हैं टाइसन स्पोर्ट गेमिंग चैनल। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहने वाली है, हम 8000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज रहने वाले हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी ऑल पे कर दो ताकि डेली बेसिस पे ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स और हाइलाइट्स का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारे पास रहने वाली है ISF वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 के ग्रुप बी के रिजल्ट्स के रिलेटेड, जिसको विन किया टीम ALAIKUM ने और पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई हो चुकी है रियाद इवेंट के लिए। ग्रुप बी के अंदर आपको पाकिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया टीम क्वालिफाई करते हुए नजर आ जाएगी और ग्रुप ए के अंदर आपको बहरीन और मंगोलिया की टीम क्वालिफाई करते हुए नजर आ जाएगी। मंगोलिया से आपको टीम ISC स्पोर्ट खेलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो मेन इवेंट रहने वाला है वो आपको रियाद में देखने को मिल रहा है, जिनकी डेट्स आपको 11 नवंबर से लेकर 19 नवंबर को देखने को मिल जाएगी, जो कि एक लैन इवेंट रहने वाला है जिसका टोटल प्राइस फुल $1,30,000 रहने वाला है। फॉर्मेट की बात की जाए 16 टीम्स रहने वाली है, जिसके अंदर एक टीम सऊदी अरेबिया की रहने वाली है बिकॉज ये होस्ट कंट्री इनवाइट रहने वाला है। दूसरी टीम कजाकिस्तान की रहने वाली है बिकॉज लास्ट चैंपियन वो रहने वाली है। 5 स्लॉट से रहने वाली एशिया ओशन क्वालिफायर से अभी यूरोप क्वालिफायर्स होने हैं, अफ्रीकन चैंपियनशिप होनी है और अमेरिकन क्वालिफायर्स होने हैं, जहाँ से टॉप 5, टॉप 2 टीम्स ने जाना है। फील्ड वर्क के लिए अभी सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, बहरीन, पाकिस्तान, म्यांमार और टीम इंडोनेशिया ने क्वालिफाई कर लिया है। 7 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है, अभी बाकी टीम्स भी रहने वाली है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ISF के मैच के अंदर डे 2 के अंदर ALAIKUM के उज़म और साथ में IQ की जानिब से डुओ डोमिनेशन दिखाई गई थी। उस टीम का पार्ट भी आपको चेकआउट करवा देता हूँ। Looked that unlikely. They just had a knock, but he's gotten back up. So Vietnam continues to rotate in to the western side. They're playing very edge heavy. I wouldn't have expected, honestly, out of all the teams. Maybe that's also due to the fact that it's just such an east heavy circle. But out of all the teams, I would have expected to play a little bit more centralized. I would have set Vietnam, especially out of the top teams. But they're continuously trying to take a similar kind of approach to Indonesia now, taking huge space on the edges and then rotating in because of that, and making sure they get a safe entry at the very least in phase 4 and phase 5. It's been working, but anything after that, as we said, gets significantly more complicated. The more teams you have and the more edge you are. Yeah, it's the more complicated playstyle for sure, but it's been working for these guys. That is for certain. 3 elims now. Teams in front of them are weak. That can be a massive opener that can make the push so much easier later on, like that. But it's a nice frag back from Cook. It's a second one out of the shack as well. He's doing so much damage here, finally taken down. And once again, it's Malaysia doing damage, but it's the numbers of Pakistan that keep them in this. It's just so important how closely they are stacking to each other, Felix. Second time in this game that they do get knocked down because they are so aggressive, but they're able to consolidate almost immediately. Yeah, and that's so important, that immediate consolidation. IQ gets another one. It's this second frag as well. IQ once again showing off why Pakistan is such a force to be reckoned with. Yoni now is also grouping up. That's pretty good. All the rest of the I8 players, aka the Pakistani representatives, have now been grouped up on that shack. It is a tough zone, as I said. Sometimes you just have to make do with what you get. This time around, it's that little shack. You have people above you, which I do believe might have been Vietnam, actually, now. I only saw a light green team of them. I'm not sure who it is, too. So, more is needed. Pakistan, I mean, well, you said they have a little bit more space now with a fight going on right behind them, and they're using it. They're using it. It's the road for them to even make anything against that happen. I don't think they know where Yoni is at the moment. If Mobile exits his vehicle, he's going to be an easy pickup for him. He peeks around the corner. Bhutan loses its first player, and suddenly everything becomes possible again for Pakistan. I think the nade is going to flush that player too. This is such a strong pickup for Pakistan right now on that eastern edge. Just goes a little too far, goes a little too high up. He wants to take a powerful tree position, right? But he's going too high up. He's not able to be covered anymore by any of his teammates. Ay, 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 not the opening you want. Bhutan, this was one of the games you could have closed it out in, but they're just meeting the best players in the lobby. It's just not looking good for them right now. Look at that nade, it's so good. Might be almost perfect. IQ gets taken down very low. Both players still need to be very careful, but then again, the Bhutan players are still far from really being grouped up, and this could give Yoni another opportunity of maybe taking another knock. He will at least get the flash in.
Look how Pakistan has once again turned around the situation. Just based off of smart play and good edge holding, they've reduced the 4v2 down to a 2-on-2. And Bhutan, look at this, they're getting shot in the back even further. IQ, what is this guy made of? It's their 7th potential frag, depending on who's getting that flash. And Bhutan is being picked apart one by one. Yeah. These guys cannot be stopped. And we were asking ourselves before this match, is this going to be the qualification for Riyadh? And I think at this point, it looks very likely. 100%. They're just not to be stopped right now, right? They seem to be in a different class. One first aid is all that IQ has to work with. There's nades coming his way, but look at that. No hesitance at all. He knows he has a knocked player right next to them. He knows he has to be careful, but he does not care. 7 defeats for IQ right now. He's still got Yona in the back, holding over his shoulder a little bit. But you can just tell they're having fun with it as well. The conflict creep up that Pink has not realized, right? He's not seen that move coming out, and there's IQ catching one. What is going on, Felix? These guys are just not to be stopped. Everything they touch is just turning into gold. Now they've brought this down into a 2v1. They seem to have such a good idea as well about where Emperor is playing. And Pakistan is on the brink of making the unthinkable happen. We said it before. Pakistan have been playing out of their mind so far. The I-8 roster has been representing their nation to the best of their ability. And it's just one player in between them and the win here. The upset, the unthinkable. They've started this edge clearing process with only 3 players. Emperor takes down Yoni though. And it's down to IQ, the one player who's been helping Pakistan throughout these matches so very long. And that nade is pretty good. Has to jump to the side, pre-fire towards the left side of the tree. And it's not happening just yet. He's got another nade going. That one is really close. Oh, Chinese Taipei has done it. And it's the one. अब बात करते हैं लियो स्पोर्ट्स के बारे में। लियो स्पोर्ट ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की, जिसके ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। लिखा हुआ है PMSL CSA फॉल 2024 और सामने उनकी टिकट्स बनी हुई है, जिससे पता लग रहा है कि लियो स्पोर्ट आपको PMSL फॉल 2024 खेलते हुए नजर आएगी। कैसे नजर आएगी वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जो लियो स्पोर्ट्स रहने वाले हैं, उन्होंने कोलैबोरेशन किया है गट्स एंड ग्लोरी के साथ। लाइक गट्स एंड ग्लोरी के कुछ प्लेयर्स होंगे, कुछ लियो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स होंगे। तो कंग्रेचुलेशन लियो स्पोर्ट्स के फैन को और हेड दामी के फैन को। और इसी के साथ साथ बहुत से रूमर्स निकल के आ रहे हैं। जो रोस्टर रहने वाला है उसमें आपको हेड दामी देखने को मिल जाएंगे, गट्स एंड ग्लोरी के कायरो, फिनिशर, हुजैफा और साथ में लियो का एक और प्लेयर रहने वाला है, उसका मुझे नेम नहीं पता, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहने वाली है नेपाल के फैंस के लिए। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड। तो आप सबको पता है गोनेक्सा ये ने क्रिप्टो को रिसेंटली फेयरवेल दे दिया था और क्रिप्टो ने टीम 52 स्पोर्ट को ज्वाइन कर लिया है। इन सब पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले थे। क्रिप्टो ने i8 को खुद लीव किया, यहाँ टीम i8 ने क्रिप्टो को निकाला है, जिसके ऊपर AS कंपनीज के ओनर समद बाबर, जो कि टीम गोनेक्सा ये के स्पॉन्सर रहने वाले हैं, उनका कहना ये था कि टीम में जो भी एडिशन होना या किसी भी प्लेयर को निकालना, उसकी सारी अथॉरिटी ट्रेंडा की रहने वाली है। और ट्रेंडा ने क्रिप्टो को खुद निकाला। निकालने की वजह उन्होंने ये बताई है कि क्रिप्टो की वजह से बाकी जो 3 प्लेयर्स रहने वाले थे जो कि प्रेशर ले रहे थे। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि हर दफा सिर्फ अच्छे प्लेयर होने की जरूरत नहीं होती, आपको एक अच्छा टीममेट भी बनना पड़ता है। तो अब जो चला गया उसे छोड़ दो। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो टीम प्लेयर्स रहते हैं उनकी चेंजेस होती रहती है। तो काइंडली सबसे रिक्वेस्ट रहने वाली, ना क्रिप्टो और ना ही टीम i8 को आप हेट दें, दोनों को सपोर्ट करें। दोनों के साथ पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। तो सबसे रिक्वेस्ट रहने वाली है इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले, ना के नेगेटिव वे में। विश यू बेस्ट योर लक क्रिप्टो को, 52 स्पोर्ट्स को, टीम गोनेक्सा 8 को, पाकिस्तान की हर एक टीम को। और इसी के साथ साथ बात करते हैं गोनेक्सा 8 के फलक के बारे में, जिनका रिसेंटली 1v4 निकल के आता है RCB के ऊपर। उस टीम का पार्ट भी आपको चेकआउट करवा देता हूँ। Faşa'nın olduğu noktaya doğru iyice yaklaştılar. Orada bir bomba çekildi ama bir merdiven mücadelesi olacak. Orada Faşa burada tek başına sanırım Falak Loxi'yi düşürdü. Derken burada da bir mücadelemiz devam ediyor. Evet, farklı ekiplerden o mücadele sürerken burada da bir temasımız var. Hemen bu noktaya tekrar dönelim. Burada çok büyük bir yakın temas var. Falak'ın olduğu noktaya doğru geçiyoruz tek başına. Mücadelesi devam ediyor. 4. skorunu almış durumda. Wild Baygın kımızın olduğu noktaya doğru bir nade denemesi geldi. Yan taraftan da Silas'ın hareketi olacak. Falak burada tamamıyla sıkışmış durumda. Şimdi dışarıya doğru bir çıkış. Yan taraftan Silas hareket edebilir burada. Evet, Loxi mücadelenin dışarısında. Wild baygın, Falak tek başına gerçekten mücadele ediyor. Evet, Falak bir baygın da aldı geriye. Sadece Silas'ın kaldığını görüyoruz. Falak kırmızı mücadelenin dışarısında bıraktı. Wild'ı da var, evet. Silas'ın bombası Wild'a gelmiş durumda. Silas teke teke kaldı şu anda Falak'ta.
Orada bir baygın dağılmıştı Falak tarafından. Loxi'yi de onun bayılttığını düşünüyorum. Şu an çok tehlikeli bir duruma geldi Regnum Carnivore ekibinin oyuncuları. Falak da o mücadele devam edecek. Silas. Yanına kadar geldi ve evet, Falak 7. skorunu alıyor. Silas'ı da mücadelenin dışarısında bıraktı. Gerçekten inanılmaz bir temas izledik. तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।